Everyone, very good morning children. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our class children. So I hope you all are fine. Are you all fine? Yes. So student, this is our environmental studies textbook of 2nd class. Okay, I hope you all have purchased the textbook, right? If yet you did not purchase it, means please go to the office, your particular school office, and try to purchase the reader children. Okay. So students, in our last video we have completed our lesson. Okay, we have completed our lesson how our body works. We have seen that how our body works and we have learned our internal organs and external organs, right? What do you mean by the external organs? The organs which are located outside our body, which are visible to us, like eyes, ears, nose, tongue, etc. एंड इंटरनल ऑर्गन्स हम किसको बोल रहे थे? जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर रह रहे हैं. ओके, जैसे आपका लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्टमक एक्सेट्रा. ओके, टुडे वी हैव टू सॉल्व अवर ऑब्जेक्टिव पार्ट. आज हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है. ओके चिल्ड्रन, सो शैल वी स्टार्ट? राइट, come up to this page children and hold one pencil. So we will solve our objective. Okay, first bit, see this bit we are going to solve. Okay, first bit, tick write the correct answer. Now we have to tick on the correct options children. Okay, first question is lungs help us to. lungs हमको किस लिए helpful हो रहे हैं children? lungs help us to breathe. breathe in the sense सांस लेने के लिए हमको useful हो रहे हैं. So we have to tick in this third circle. Okay, tick in this third circle. Here, second one, which is not an internal organ. कौन सा organ यहाँ पर जो नीचे दिया गया है body part, वो internal organ नहीं है. Okay, so brain situated inside our body, no children. So this is internal organ हो गया. And kidney भी हमारा internal organ हो गया. अब हमको उस पर टिक करना है जो internal organ नहीं है. nose is visible to us, right? nose दिख रहा है आपको? Yes, we can see the nose. So nose is a external body parts, it is not an internal. So we have to tick in this first circle. Next one, think and write. Now we have to think and write something here children. Which organ is used to? Now what we have to do children, we have to learn these sentences and we have to write the organ name. हमको सेंटेंस पढ़ना है, वो जिसका भी फंक्शन रहेगा वो ऑर्गन का हमको नेम लिखना है. ओके, फर्स्ट वन इज ब्रीथ. What do you mean by breathe? सांस लेना. So कौन सा ऑर्गन हमको हेल्पफुल होता है इसमें? lungs. Very good. So we have to write lungs. What is the spelling of lungs? lungs, lungs. Next one, pumps blood to all parts of the body. ये कौन सा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के all parts को ब्लड पम्प्स करता है, ब्लड सप्लाई करता है. ओके, which organ that is? heart. HEART, heart. डाइजेस्ट फूड. ओके, फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड को हाजमा कर देता है. वो कौन सा ऑर्गन हो गया चिल्ड्रन यहाँ पर? दैट इज स्टमक. वेरी गुड, STOMACH, स्टमक. एंड थिंक, विच ऑर्गन इज यूजफुल फॉर द थिंकिंग? हमको सोचने के लिए, रिमेंबर के लिए. आई सेड यू नो विच ऑर्गन वी आर यूजिंग? वी आर यूजिंग ब्रेन, राइट? सो वी हैव टू राइट देयर ब्रेन. स्पेलिंग ऑफ द ब्रेन, BRAIN, brain children. Okay, if it is not clearly visible to you, then you can turn up your page from back side and all internal organ names written, no, you can copy from that back page. Okay children, पीछे भी है ना सारे internal organs के नेम, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो जो रीडर में है. Now come up to the next page. Circle the odd one in each group. अब यहाँ पर हमको रीड करना है. जो भी odd one रहेगा, it means which is wrong, which is not matching with the other words. Okay, so we have to सर्कल अप. वहाँ पर हम सर्कल करेंगे. ओके, फर्स्ट वन, टाइगर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स. नाउ सी हियर चिल्ड्रन, हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स, दिस थ्री आर मैचिंग, दिस थ्री आर इंटरनल ऑर्गन. बट फ्रॉम वेयर दिस टाइगर कम्स? ये टाइगर कहाँ से आ गया? दिस इज नॉट अ करेक्ट वन. सो दिस इज अ ऑड वन. वी हैव टू सर्कल अप ओवर देयर. ओके, हाउ विल यू सर्कल चिल्ड्रन? यू हैव टू सर्किल. ओके, हाउ विल यू सर्कल? यस, we have to circle like this. Okay, like this. Next one, tongue, eyes, tree, ears. Now you see tongue, eyes, trees,
ears, these three are external organ, but tree comes here, so we have to do the circle because it is a odd one. ये odd हो गया children, okay? It is not matching with the other organs. Now come to our next bit. Pick right the correct answer. Now which one is correct? We have to put right over there. फर्स्ट वन, आफ्टर वी swallow our food it goes into our, जब हम फूड को ईट कर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं चिल्ड्रन, swallow करते हैं, उसको निगलते हैं, राइट. सो swallow करने के बाद फूड कहाँ पर जाता है अपना, ऑब्वियसली it goes to stomach. So we have to write it, we have to tick in the circle of stomach. Okay, we have to tick in this circle. Next, please come to the next page. Our body is a dash machine. Our body is a which machine children? Our body is a living machine. So we have to take in first circle. I said it is a living machine because it works, it performs different tasks and different functions at a time, right? एक ही टाइम पर कई सारे functions and कई सारे वर्क कंप्लीट करती है अपनी बॉडी. सो इसीलिए बॉडी क्या है, हमारा लिविंग मशीन है. What should you learn from bones and muscles? हमको bones and muscles से क्या मिलता है, क्या सीख मिल रही है यहाँ पर, हमने क्या सीखा. See children, our bones and muscles work together, right? अगर bones नहीं रहेंगे तो muscles में work नहीं कर सकते हैं, अगर muscles नहीं है तो there is no work for the bones, right? So what they are doing, bones and muscles जो combine होकर, suppose example my hand, okay? In my hand bones are also present as well as muscles भी present है, और ये दोनों combinedly क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं चिल्ड्रन. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द बोन्स एंड मसल्स, वी शुड वर्क टुगेदर. यू हैव टू टेक इन फर्स्ट सर्कल, हमको भी एक साथ मिलकर वर्क करना चाहिए चिल्ड्रन. ओके, नेक्स्ट बिट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेम 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के 4 इंटरनल ऑर्गन्स के आपको नेम बताना है. सो व्हाट आर द इंटरनल ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड इनसाइड अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर है. ओके, नाउ गिव 4 नेम्स. ब्रेन, lungs, stomach, heart. Very good. What is the spelling of brain? B-R-A-I-N, brain. L-U-G-S, L-U-N-G-S, lungs. S-T-O-M-A-C-H, stomach. H-E-A-R-T, heart children. Okay, all these are what? Internal organs. Name the 2 internal organs found in the chest. 2 internal organs के नेम बताना है जो हमारे चेस्ट में है. What do you mean by here? Internal organ चेस्ट में रहना children. Okay, so हमारे जो सीने में है, that is nothing but H-E-A-R-T, heart and lungs. How are bones and muscles useful for us? Bones and muscles हमारे लिए किस तरह से useful है? Bones and muscles help us to move, run and play. Bones and muscles हमारी help करते हैं move होने के लिए, यहाँ से वहाँ पर move होने के लिए, and run करने के लिए, भागने के लिए, and even play करते हैं with the help of bones and muscles only. Okay, now come to our next bit. Complete the words with the help of given picture clues. Now we have to complete the words given picture clue. So children, by seeing that picture, I hope you are recalling the names of the picture, right? Can you repeat the name of that first picture? What we should write? What is the picture of that first one? Yes, it is brain children. It is brain. So we have to write the name brain. B in first, B-R-A-I-N. Okay children, you have to write each letter, one letter in each box. Okay, only one letter you have to write in each box. B-R-A-I-N. Okay, the next one, see the picture and tell me the name. Yes, it is heart. H-E-A-R-T, heart. Okay, so we have completed this objective bits also. Now come to the homework children. This is your work which you have to write one time in your notes. Okay, आपको ये work आपके notes में one time, EVS notes में one time लिखना है. Just now we have done, no children, which organ is used to breathe, lungs. Which organ useful for the pumping of the blood के लिए कौन सा organ use है? Heart we are using. And food को कौन digest करता है? Stomach. And how we can think children? With the help of brain. Okay, so you have to write this bit one time in your EVS notes. Do this and keep it ready. Inshallah, I'll be back with the next video with another lesson children. Okay, till then take care and have a nice day everyone.